Yes, it is. Right, Bismillahirrahmanirrahim. So let's continue with where we left off from last class. So just as a quick revision, हमने पिछली क्लास में बात की थी about the HTT gene, a gene जिसका अगर dominant allele express हो जाए, then that leads to Huntington's disease. उससे पहले we talked about the factory gene, एक ऐसा gene जिसका recessive allele अगर express हो जाए, in which obviously means कि that person will be hemophiliac. And आखिर में we talked about the HBB gene, कि अगर if in this case recessive allele express हो जाए, then that would mean sickle cell anemia. However, if a person is a carrier, then that means there's a very mild sickle cell anemia, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि some of the many red blood cells are just sickle cell shape, बाकी majority are bioconcave dish shape. इसका मतलब ये होता है कि for a person who has very mild sickle cell anemia, it will not affect their day-to-day functions. But what if a person has sickle cell anemia? मतलब उनके दोनों जो alleles हैं, they are recessive and the recessive trait is being expressed. तो उसमें all of the red blood cells are sickle cell shaped. फिर उसकी वजह से arteries ब्लॉक होती हैं, सॉरी कैपिलरीज ब्लॉक होती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लिमिट और अफेक्ट होता है, and that obviously leads to blood clotting because blood capillaries are being blocked. Okay, today we're gonna start with talking about the last gene that you should know about, and then we'll move on to the last topic, which is gene expression is chapter ka. So Sir, before we move yeah, on, ask like albinism, is it an example of autosomal linkage? so if I can just go back to the HBB gene, or the first one, in fact, the TYR gene, right here. So albinism, yes, because the TYR gene is present on an autosome. तो उसी जीन की इनहेरिटेंस अगर हम ऑटोसोमल लिंकेज या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, तो इसी जीन का अगर रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, दैट्स एल्बिनिज्म, व्हिच मींस दैट दैट्स ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. या Yeah, thank you. I just had a test today, so I just wanted to confirm. ओके ओके. सो व्हाट वाज द टेस्ट अबाउट, एज इन व्हाट चैप्टर्स? It was inheritance and 17.1 about like variation. Okay, all right. So now we're going to talk about the final gene which you should know for your syllabus, and this is called the LE gene. अच्छा, अब इस जीन का नाम ही एली जीन है, एज इन इट्स नॉट एन एब्रीविएशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म फॉर. इसका नाम ही एलई जीन है. इसकी लोकेशन का है, लेट्स लुक एट दैट. द लोकेशन ऑफ दिस जीन इज दैट इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स. तो इसका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन न्यूक्लिया, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है. प्लांट्स के अंदर ये जीन्स काम करती हैं. अगर हम एक नॉर्मल एली जीन को देखें ना, एज इन अ जीन, दिस एली जीन जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई, सो normal, again, we do not really use the word normal, we are just using it to differentiate it from the mutated एली gene. ये वाली नॉर्मल जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम. तो अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुई हुई, तो ये एक एंजाइम के लिए कोड करती है ये जीन, जिस एंजाइम की मदद से वी आर एबल टू प्रोड्यूस active gibberellins. So do you remember the gibberellins ka topic in homeostasis? Have you revised that part here? Yeah, I did. Yeah. So ये gibberellins जो है, that was one of the hormones like auxin, but we're not going to talk about auxin right now. Gibberellins was one of the other hormone जो कि stem and cell elongation में involved था. तो ये जीन एक एंजाइम के लिए कोड करती है, and this enzyme helps to produce gibberellins that are active. That's the more important part. मीनिंग कि गिबरेलिन का जो भी फंक्शन था, ये जो भी चीजें अफेक्ट करता था, ये अब वो अफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो डोरमेंट नहीं है, वो अपनी एक्टिव स्टेट में. अब ये गिबरेलिंस क्या करेगा? सो नंबर वन, द एक्टिव गिबरेलिंस वुड बी एबल टू स्टिम्युलेट द XET एंजाइम, समथिंग वी टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 14. ये वो एंजाइम था जो कि बॉन्ड्स को तोड़ेगा बिटवीन द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. So you have the XET enzyme. Then number two, obviously breaking the bond, but this is a different one compared to the first one, breaks the bond between the hemicellulose molecules. Gibberellins का ये function भी होता है. And then the third function for the active gibberellins is, or you could say a result of that is, कि cellulose microfibrils move apart. क्योंकि XCT enzyme stimulate होता है and that breaks the bonds, hemicellulose के बीच में भी bonds टूटता है, cellulose microfibrils move apart.
Now, could you tell me what's going to happen if these microfibrils move apart? As in, what's the effect of these microfibrils moving apart? इससे फर्क क्या पड़ता है? It basically, when the cellulose microfibers move apart, the cell wall elongates, And that eventually leads to cell cell elongation. elongation. बिल्कुल सही। तो सेल वॉल elongate करता है इवेंचुअली, क्योंकि सेल वॉल elongate ना करना वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ व्हाई वी वर सेइंग कि सेल elongate नहीं कर पा रहा, क्योंकि सेल वॉल तो अभी भी रिजिड स्ट्रक्चर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो जब सेल वॉल elongate कर रहा है, सो अब हम बोल सकते हैं ओवरऑल सेल की elongation होती है। एंड दीज वर द सेल्स फाउंड इन द स्टेम। तो जब स्टेम के अंदर सेल्स elongate करते हैं, सो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि स्टेम की elongation हो रही है। एंड इफ वी लुक एट अ प्लांट and we see the stem of that plant elongating, does that mean that we are going to form a tall plant now? Yes. So this is what we could say would be the result of a normal gene or the normal Le gene coding for the enzyme. It codes for active gibberellins. Active gibberellins stimulates the XCT enzyme, breaks the bond between hemicellulose molecules. Cellulose के microfibrils एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. Cell wall elongate करता है, cell elongate करता है, which means के stem elongate करता है और फिर plant की height बड़ी हो जाती है. Now let's look at what happens if इस gene को mutate कर दिया जाए. So what happens when there is a mutated LE gene? Again, just to repeat, ये जो mutation है ये किसी भी तरीके से हो सकती है, artificially, naturally, by anything. So this gene now would be coding for a non-functional enzyme. तो एंजाइम के लिए तो कोड करेगा, लेकिन दिस विल बी अ नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो एंजाइम का फंक्शन क्या था? एक्टिव गिबरेलिंस प्रोड्यूस करना। अब जब एंजाइम ही फंक्शन नहीं कर पा रहा, व्हिच मींस दैट नाउ we will be producing no active gibberellins. So think of this as a in the form of a story. Think of these as consequences after consequences. अगर enzyme functional नहीं है तो gibberellins active नहीं होंगे. Gibberellins अगर active नहीं है तो फिर cell elongate नहीं होगा, क्योंकि cellulose microfibrils will not move apart. Cell elongate नहीं होगा तो फिर stem भी elongate नहीं होगा. There is no stem elongation. And when you don't have a plant जिसका stem elongate कर रहा हो, that means that you're going to produce a plant that is short in height. So a short plant. So you could think of the consequences in two ways. Normal LE gene, tall plant. Mutated LE gene, short plant. अच्छा, ये जो म्यूटेटेड एली जीन होता है ना, दिस इज द रिसेसिव एलील जिसको हम स्मॉल एल और ई से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइल द डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल एल और ई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव कैपिटल एल ई एंड कैपिटल एल ई, व्हाट इज द phenotype for this? A tall plant, बिल्कुल. Now what about एल ई and then small एल ई? What about this? still a tall plant, And what about the third one? short plant. Short plant. So दो cases में when we have a homozygous dominant and we have a heterozygous, that's a tall plant. But when as soon as we have a homozygous recessive, that's when we have a short plant. Okay, that's about it for the genes की explanation. Now we're gonna move on to आज का main topic, and that is gene expression. I'm gonna take this topic a bit slow क्योंकि this is obviously our last topic और इसको समझने भी थोड़ी मुश्किल होती है because it consists of many important points. Some of the points are out of the syllabus, कुछ points are in the syllabus. So we need to stay within the boundaries of our syllabus, and that's why it will take a bit of time to understand this. Let's start this with a simple example. Let's suppose we talk about the cells जो कि islets of Langerhans में होते हैं. So one of those cells is beta cells. And then let's take a completely different example. Nervous system के अंदर let's pick up relay neurons. And let's try to compare these two. And you'll understand why I'm comparing these two in just a moment. Let me ask you this. क्या ये दोनों जो cells हैं, neurons are also a type of cell, right? जो कि nerve cells बनाते हैं, nerve tissue बनाते हैं. तो क्या ये दोनों cells genetically identical हैं? Uh, no. No. Okay. तो aren't these the cells that are present in the same body? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर
पैंक्रियाज में से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से बीटा सेल्स को एक्सट्रैक्ट करें और रीले न्यूरॉन को एक्सट्रैक्ट करें. If we look into the nucleus of beta cells and the nucleus in the cell body of the relay neurons, aren't they going to have the same 46 chromosomes and same genetic material inside of them? Yeah. Yeah. They're going to. So the reason whenever we say that two cells are not genetically identical is two conditions की basis पे, या तो वो different bodies में से लिए गए हो. So for example, body A या person A में से beta cell निकाला हो and person B में से relay neuron निकाला हो, that's when we can say it's not genetically identical. या तो apart from this example, if you're looking at a diploid cell and a haploid cell, that's genetically different. But then if you're looking at two diploid cells from a same person, doesn't matter कौन से दो diploid cells हैं, beta cells, relay neurons, cardiac muscle cells and elbow के cells, does not matter. All of these उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम होगा. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स हैं ये. But then tell me this, do they have the same function? No, they don't. They don't. What's the function of beta cells and what's the function of relay neurons? The beta cells, they secrete insulin, and the relay neuron, they transfer impulses from the sensory neuron to the motor neuron. मोटर न्यूरॉन, बिल्कुल सही. दो अलग अलग डिप्लॉइड सेल्स हमारी बॉडी में है, बीटा सेल्स एंड रिले न्यूरॉन का हमने एग्जांपल लिया. दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं. अगर दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, दोनों के फंक्शंस कैसे अलग अलग हैं? मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन फाउंड इन द बीटा सेल, लेट्स से, और द क्रोमोसोम, सॉरी. तो इस क्रोमोसोम में एक नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसे एग्जिस्ट करता है, इट्स नेवर गोना बी लाइक दिस. दिस इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी होती है. यहाँ पे हम सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहे, सो दिस इज नॉर्मली व्हाट द क्रोमोसोम वुड लुक लाइक. अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, दिस दिस इज द जीन दैट कोड्स फॉर इंसुलिन. क्या ये जीन दोनों बीटा सेल में एंड रीले न्यूरॉन की सेल्स में होगा? बिकॉज वी जस्ट सेड दैट दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट? Yeah, it will be there. इट विल. जितने क्रोमोसोम्स बीटा सेल्स में हैं, उतने ही सेम एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स रीले न्यूरॉन्स में भी होंगे, व्हिच मींस कि जो भी जीन्स बीटा सेल्स में है, बिल्कुल उतनी ही जीन्स रीले न्यूरॉन्स में होंगी. बट द मेन थिंग, सिर्फ बीटा सेल्स में इंसुलिन के लिए कोड करने वाली जीन काम करती है, लेकिन रीले न्यूरॉन में वो काम नहीं करती. ऐसा ही है? इज दैट राइट? Yes. एनी आइडिया ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर रिले न्यूरॉन में भी इंसुलिन की जीन है, तो व्हाई इजंट द रिले न्यूरॉन आल्सो कोडिंग फॉर इंसुलिन? Because certain genes are expressed and certain are not, according to बिल्कुल the सही. function. या कंटिन्यू, या. So like certain genes are like expressed according to the function. Like for example, if we don't need a gene to be expressed, like because it does not have a function over there, then we won't express it. बिल्कुल सही, परफेक्ट. सेम जीन्स दोनों सेल्स, दोनों डिप्लॉइड सेल्स में फाउंड है, लेकिन क्योंकि कुछ जीन्स का कुछ सेल्स में फंक्शन नहीं होता, तो हम उनको वहां पे एक्सप्रेस नहीं करते. फॉर एग्जांपल, इंसुलिन जीन का रीले न्यूरॉन में क्या कोई रोल है? कोई रोल नहीं है, इसलिए इंसुलिन जीन रीले न्यूरॉन में काम नहीं आता. बट ऑन द सेम हैंड, इफ यू लुक एट, लेट्स से, इफ यू कंपेयर टू मोर सेल्स, जहां पे एक सेल में किसी एक जीन का फंक्शन है और दूसरे सेल में उस जीन का फंक्शन नहीं है, in the other cell, that gene is not going to be expressed. So let me write this here. The same genes are present in all cells of the body, but in different cells, different genes are expressed. Different genes are expressed. Let's talk a bit more about ये जो word लिखा है expressed. इस expressed word का मतलब क्या था?
एक्सप्रेस्ड वर्ड का मतलब होता है कि यू हैव अ जीन, फॉर एग्जांपल हियर दिस जीन विच कोड्स फॉर इंसुलिन, इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, which means that ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस होगा, वी आर गोइंग टू मेक द mRNA का स्ट्रैंड, उसके बाद फिर RNA की स्प्लाइसिंग होगी, which is where we are going to make the functional mRNA strand, जहाँ पे exons are removed and introns are joined together, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, एंड इन द एंड इनसाइड द राइबोसोम ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, we produce a polypeptide chain, hence a protein molecule. That is what we mean by genes getting expressed, isn't it? Yeah. Is that, yeah. Now, this is what you need to understand कि अगर genes getting expressed का मतलब यही होता है कि transcription, RNA splicing and translation, then why do we use a different word? Why do we say that they are getting expressed? Why can't we just explain a concept जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है? It's because it's easier to just say it out loud. Instead of saying transcription होती है, exons removed, introns joined, translation होती है, tRNA आता है, amino acids bind करते हैं, अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन बनता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दैट, वी जस्ट से जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. तो इन द एंड इट्स द सेम रिजल्ट, वी गेट द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हेंस द प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके, अब एक और चीज, कुछ सेल्स में कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं और कुछ सेल्स में कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर. बीइंग एक्सप्रेस्ड और बीइंग नॉट एक्सप्रेस्ड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, being turned on or being turned off. So, for example, this is not something you would write in the exam, just for you to understand. For example, insulin cell relay neuron में turned off होगा, switched off होगा, express नहीं होगा. On the same hand, बीटा सेल्स में ये इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस्ड होगा क्योंकि वो स्विच ऑन होगा या टर्न ऑन होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीन एक्सप्रेशन, वी कैन टॉक अबाउट टू थिंग्स, कि जीन की जो एक्सप्रेशन होती है, दिस इन्वॉल्व्स which gene is going to be expressed, कि कौन सा जीन कौन से सेल में एक्सप्रेस होने वाला है, जैसे कि हमने अभी देखा था. एंड दूसरी चीज, जो भी जीन एक्सप्रेस होने वाला है वो कितने रेट पे एक्सप्रेस होगा, एट व्हाट रेट does the expression occur. Let's look at an example for the second point. At what rate does the expression occur? I'm gonna go back to this right here. So let's go back to the LE gene, for example. LE gene क्या करता था? एक एंजाइम के लिए कोड करता है जो कि एक्टिव गिबरेलिंस प्रोड्यूस करती है. अगर ये जीन की एक्सप्रेशन के रेट को हम तेज कर दें, बढ़ा दें, which means that now it's being expressed faster and faster and faster. उसका मतलब क्या होगा कि in the same amount of time you are now creating more mRNA strands, you're creating more polypeptide chains, you're creating more enzymes. Is that right? That's what increasing the rate of expression Yeah. means, yeah? So when you're increasing the rate of expression, in this case, you're creating more enzymes. If we create more enzymes, is that going to increase the height of the plant even further? Yes, it will. Okay, now let's look at situation number two. जीन, इसी एली जीन की एक्सप्रेशन को हमने बढ़ाया नहीं, हमने नॉर्मल ही रखा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, वी केप्ट इट नॉर्मल, वी डिड नॉट इंक्रीज द रेट. तो फिर प्लांट अभी भी टॉल होता, लेकिन इतना टॉल नहीं होता जितना सिचुएशन नंबर वन में था, जहाँ पे एक्सप्रेशन के रेट को बढ़ाया था. सो डज दैट मेक सेंस कि व्हाट डू वी मीन बाय किस रेट से जीन एक्सप्रेस होगा? Yeah. बिकॉज जिस रेट से जीन एक्सप्रेस होगा वो फिनोटाइप को भी फिनोटाइप को भी अफेक्ट करेगा. अगर ज्यादा रेट से एक्सप्रेस होगा तो हमारे वाले एग्जांपल में इट्स गोना बी अ मच मच मोर टॉलर प्लांट. अगर नॉर्मल रेट से एक्सप्रेस होगा, इट्स गोना बी जस्ट अ टॉलर प्लांट. तो जीन एक्सप्रेशन में दो चीजें आती हैं, कौन सा जीन एक्सप्रेस होने वाला है, एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, वो किस रेट पर एक्सप्रेस होने वाला है. नाउ बिफोर वी मूव ऑन, हमें कुछ डेफिनेशंस इसमें समझनी पड़ेंगी. So I'm going to write all of the words you need to know the definitions for, which are in your syllabus. We'll understand these definitions one by one, and then we'll move on. So the first word is structural gene.
Number two is regulatory gene. Then we have a promoter region. Then inducible enzymes. And then number five is repressible enzymes. एक एक करके हम every single terminology को समझते हैं. So let's first understand these two words first. Structural gene and regulatory genes. When you read these two words, you do understand the fact that both of these are genes, right? इसका मतलब कि both of these are a length of DNA on a chromosome जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोड करेंगी because they have the word gene in them. But then एक का वर्ड एक के साथ नाम लगा हुआ है स्ट्रक्चरल और एक जीन के साथ वर्ड यूज किया हुआ है रेगुलेटरी. Why is that? Why are these two genes different? Let's understand that. पहले तो I'm gonna write down the definition for structural gene. So number one is structural gene. Number one की definition मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. It's a length of DNA on a chromosome coding for a protein. So is this sentence right here यहाँ तक it just explains this word right here. Gene का मतलब क्या है? Length of DNA on a chromosome coding for a protein. Now let's explain ये structural word का मतलब क्या है. So coding for a protein that has a function inside the cell. And then definition number two, we'll explain these two definitions together. Regulatory gene क्या होता है? So let's just copy paste this. Length of DNA on a chromosome coding for a protein. So copy, then paste. लेकिन this time, this protein is the not having a function inside the cell. ये protein affect करती है the expression of other genes. So let's look at an example. Let's suppose I have a cell right here. So this is a bit oval shape cell. Okay, अब circular shape cell आ गया. इस cell के अंदर we have the nucleus. So assume this entire thing is the nucleus right here. अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं. हम एक क्रोमोसोम में एक सेक्शन ऑफ द डीएनए को देखते हैं. Let's suppose that section of the DNA is this right here. So assume this is a structural gene. स्ट्रक्चरल जीन की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसी जीन जो एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करती है जिसका सेल के अंदर फंक्शन होता है. लेट्स अज्यूम कि दिस जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम. सो जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, दिस कोड्स फॉर एन एंजाइम. और ये एंजाइम का काम क्या है? जो इसका बेसिक फंक्शन होता है सबस्ट्रेट्स को अटैच करना अपनी एक्टिव साइट के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड देन रिएक्शन को करना. और इसी एंजाइम के substrates cell के अंदर found है. तो what's gonna happen? The gene is going to be expressed. It's मतलब कि transcription, RNA splicing, translation. एंजाइम एक प्रोड्यूस होगा. ये एंजाइम जो प्रोड्यूस होगा, this is going to simply cause these active site में attach cause these substrates to simply attach to the active site. So if I can just change the shape of these substrates up a bit, इस तरीके से. So you see this green part right here, this is the substrate, and this red part right here, this is the entire active site. तो ये बेसिक काम है एक स्ट्रक्चरल जीन का. But then what's a regulatory gene? एक ऐसा जीन जो कि अफेक्ट करेगा दूसरी जीन्स की एक्सप्रेशन. So let's suppose we have this gene right here, we have this chromosome और यहाँ पे ये जीन है. Let's suppose this is a regulatory gene. अब now this is important. रेगुलेटरी जीन एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करेगा विच हमारे एग्जाम्पल में इट्स गोइंग टू ब्लॉक दिस एंजाइम फ्रॉम गेटिंग एक्सप्रेस्ड. अगर ये ब्लॉक करेगा दिस एंजाइम फ्रॉम गेटिंग एक्सप्रेस्ड,
Is the enzyme going to get produced? Sorry, it's blocking the gene from getting expressed. So is the enzyme going to be produced? No. The enzyme is not going to be produced. If the enzyme is not produced, तो वो substrates के साथ active site में attach नहीं होगा and reaction complete नहीं हो सकेगा. तो यहाँ पे regulatory gene का काम क्या था? It's still a length of DNA, it's still on a chromosome and it's still coding for a protein. बट इस प्रोटीन का सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं है. ये प्रोटीन दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है. So there are three types of affecting or ways in which a regulatory gene can affect a structural gene. So let's take the first example. Let's say you have a regulatory gene. अब ये regulatory gene express हुआ और इस expression की वजह से we have made a protein. अब ये प्रोटीन जो है ना, लेट्स से कि इसने स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ कर दिया. दैट्स व्हाट वी मीन बाय अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, राइट? ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया रेगुलेटरी जीन ने, ये कॉज कर सकता है स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ होना या स्विच ऑन होना या रेट ऑफ एक्सप्रेशन को चेंज करना स्ट्रक्चरल जीन के. सो डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. ओके. So let me write this here. Regulatory gene जब express होगा transcription, RNA splicing, translation, तो एक protein produce होगा. और protein पहला सबसे पहले क्या काम कर सकता है? It can cause the structural gene to be switched off. Again, switched off is it's not like a light bulb के switch off होगा. Switched off होने का मतलब कि वो express नहीं होगा. तो अब वो proteins वो वाले produce नहीं कर पाएगा जिनका cell के अंदर function था. अच्छा, ये रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसका एक और काम भी है व्हिच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग. कि नाउ ये प्रोटीन इंस्टेड ऑफ कॉजिंग द स्ट्रक्चरल जीन टू बी स्विच्ड ऑफ, इट कैन कॉज इट टू बी स्विच्ड ऑन नाउ. दोनों चीजें कर सकता है. एंड देयर इज अनदर केस एज वेल. Instead of causing it to switch off or switch on, let's say कि structural gene already switched on है, it can cause the rate of expression of the structural gene to also change. मतलब increase करवा सकते हैं, decrease करवा सकते हैं. So for example, इस प्रोटीन की वजह से अब या तो ज्यादा एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं या कम एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. It can go both ways. So it can cause the rate of expression or the rate at which the structural gene is being expressed to change. So any confusions until here कि structural gene और regulatory gene में difference क्या है? Anything? Okay, so if you have no confusions, I'll just move on. So just to summarize, regulatory gene, structural gene, both of these are genes. दोनों प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसका सेल के अंदर फंक्शन होता है. रेगुलेटरी जीन में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है. नंबर 3, द प्रोमोटर रीजन. ये कौन सी रीजन है? लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस. प्रोमोटर रीजन एक रीजन होता है ऑफ डीएनए या एक सेक्शन होता है ऑफ डीएनए. इस सेक्शन जो है ना डीएनए का, इसका एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है. एज इन द न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन द प्रोमोटर रीजन, इट्स नॉट रैंडम, इट्स वेरी स्पेसिफिक. और ये वो रीजन होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है. कुड यू टेल मी द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? You would have done this in AS. आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है? It does transcription, I think. ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल. आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन. के मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसमें से एमआरएनए के स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करना. सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन. लेंथ ऑफ डीएनए having a specific base sequence. This is very important. Base sequence is not random, which is the binding site
of RNA polymerase. Okay, now what I'm going to do right now, I'm going to draw the shape of a DNA molecule. So what's the normal shape of a DNA molecule? What's the name associated with it? Double something? Double helix? डबल हेलिक्स बिल्कुल एक डीएनए मॉलिक्यूल का शेप नॉर्मली एक डबल हेलिक्स होता है सो बेसिकली इट्स जस्ट टू स्ट्रैंड्स इंटरलॉकिंग विद ईच अदर or you could say in the opposite directions to each other something like this. Okay, now this right here is the entire DNA molecule. Let's look at a section of this DNA molecule. I'm going to highlight this. And what do we call a section of the DNA molecule? A section of the DNA molecule is called a gene. Promoter region भी एक section ही है DNA का and this promoter region is found next to the gene. So अगर gene यहाँ पे the promoter region is going to be right here. This part, this section of DNA, this is our promoter region. अब इसका काम क्या था? इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा और पूरी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा सो बेसिकली इमेजिन दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज और वी कुड जस्ट मेक इट द अदर वे अराउंड इस तरीके से So imagine this to be your RNA polymerase. RNA polymerase अब यहाँ पे आएगा. It just comes right here, attaches to the promoter region, and then goes through into the gene. जब ये gene के अंदर जाएगा, ये gene के अंदर template strand की पूरी transcription करेगा, which means joining the mRNA nucleotide base sequences together. So what happens is, let me make just another drawing of it. This is the more detailed part of it. Okay. So you remember the unwinding of the DNA helix का shape where the gene is? What's that called? मतलब कौन सा enzyme ये unwinding वाला part करता है? कि this turns into this. There was a specific enzyme, DNA polymerase? DNA helicase. You remember that? Ah, yeah, I do. Which, yeah, which is the unwinding. So what happens during transcription is ये DNA helicase इस gene को ये जो section है ना DNA का it just unwinds that in order for it to form two separate strands. So it does not unwind the entire DNA, just that part of the DNA. अब क्या होगा? Imagine if this is the template strand, ये ऊपर वाली strand. Of course, there are two strands, right? The template strand and the sense strand. This is all A stuff. Then this template strand right here what happens is mRNA के nucleotides आएंगे complementary and they will keep coming close to it इस तरीके से. So these complementary mRNA nucleotides जो मैं डॉट से बना रहा हूँ they simply come close to the न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे है अब क्या होगा अब ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था जो इस प्रोमोटर रीजन के अंदर अटैच था दिस विल गो थ्रू एंड थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टेपलर स्टेपलर क्या करता है दो पेजेस को जॉइन करता है राइट दिस इज बेसिकली व्हाट इट डज इट जस्ट जॉइंस ऑल ऑफ दीज एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स तो जब ये फॉर्म होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पूरा का पूरा एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तैयार हो जाता है सो दिस राइट हियर इज द एमआरएनए स्ट्रैंड इसी एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ फिर आरएनए स्प्लाइसिंग होती है और फिर ट्रांसलेशन होती है एंड इवेंचुअली वी प्रोड्यूस अ प्रोटीन तो ये इज दिस ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस क्लियर इन द सेकंड डायग्राम Could you repeat this? Yeah. Your like distraction is Sorry, I couldn't but hear you. I said that could you repeat that? I just got distracted. ओके अच्छा सो व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से पहले यू हैव एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए हेलिकेस डीएनए हेलिकेस क्या करता है उसका काम क्या है अनवाइंडिंग द टू स्ट्रैंड्स दैट हैव इंटरलॉक्ड विद ईच अदर और कौन से सेक्शन को अनवाइंड करना है ओनली द जीन वाला हिस्सा सो फॉर एग्जांपल दिस एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इसको वो अनवाइंड नहीं करता है जस्ट द पार्ट व्हिच इज द जीन उसको अनवाइंड करता है सो दिस स्ट्रैंड राइट हियर व्हिच आई हैव हाइलाइटेड इन रेड दिस टर्न्स आउट टू बी दिस कि ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अब इनमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड द अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ हमेशा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर सारे न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस हैं व्हाट्स गोना हैपन नाउ
is that RNA न्यूक्लियोटाइड्स अब इसके सामने आके खड़े हो जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल, यू हैव दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, दिस सॉरी डीएनए न्यूक्लियोटाइड, एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, दिस डीएनए न्यूक्लियोटाइड, एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आएगा, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. जबकि फॉर एवरी सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड. अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज था, जो कि प्रोमोटर रीजन पर अटैच हुआ था, think of like a stapler joining papers together. Same thing DNA polymerase करता है, joins the RNA nucleotides together, एक एक करके phosphodiester bond सबके बीच में form करता है, and you have now formed this mRNA strand with the help of the DNA polymerase. Does that make sense? Yeah, it does. ओके. तो ये पूरे प्रोसेस के रिजल्ट में हमने क्या समझा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जीन के ऊपर आके अटैच नहीं करता. दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट यहाँ पे आएगा. इट कांट रियली डू दैट बिकॉज द जीन इज इन द डेड सेंटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. इट हैज टू अटैच फ्रॉम समवेयर एल्स एंड देन मूव इनटू द जीन. So it attaches to the promoter region and then keeps moving through the gene. टेम्पलेट स्ट्रैंड के नीचे जो सारे एमआरएनए सॉरी जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड देन इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड. तो लेट मी राइट डाउन हियर द डीएनए पॉलीमरेज DNA polymerase's binding site, or you could say the binding site of DNA polymerase, is the promoter region. So you can even draw it like this. You can draw the, if you need to draw it, if you do not really need to show the double helix shape, you can simply say, okay, acha, this is the gene, and then this is our promoter region, or is promoter region ka ek binding site hai. So think of this as the gene, think of this as the promoter region, जिसकी ये बाइंडिंग साइट पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा. एज सून एज इट बाइंड्स, it's now in the promoter region, और फिर वो keep moving through and through until it moves through the gene, and so on and so forth. So this was all you need to understand about the promoter region. All right, now let's talk about inducible enzymes. So that's definition number 4. Okay, so any confusion for promoter region? Anything? No, it's clear. Okay. अब बात करते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स की, एंड द सेकंड टाइप जो था रिप्रेसिबल एंजाइम्स. लेट्स फर्स्ट सेपरेटली टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीस. लेट्स से आई हैव टू सिचुएशंस इन द सेम बॉडी, और डिफरेंट बॉडीज, इट डजंट मैटर. पहली सिचुएशन में यू हैव अ जीन, एंड दिस जीन कोड्स फॉर एन इंड्यूसिबल एंजाइम. अभी तक हमें ये नहीं पता इंड्यूसिबल का मतलब क्या, एंड वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन अ मोमेंट, बट ऑब्वियसली इट्स एन एंजाइम, it's a polypeptide chain. It needs to be produced by a gene. अच्छा, before we move on, it's an enzyme, right? जिसका फंक्शन सेल के अंदर होता है. अगर इस एंजाइम का फंक्शन सेल के अंदर है, what does this gene become? Is this a structural gene or is this a regulatory gene? Structural gene? स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल सही. एक ऐसी जीन जो कि एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करती है which has a function inside the cell, which is exactly the case here. अच्छा, पहले केस में we have the cell right here, और इस सेल के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस होने वाला है, एंड वी नो द कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट्स जो इसकी एक्टिव साइट में जाके अटैच होंगे. बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे यू सी इट्स एन एम्प्टी सेल, मतलब कि द सेल हैज नो सबस्ट्रेट्स. ऑब्वियसली इट हैज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही सारे क्रोमोसोम्स है, बट इफ यू लुक एट द सबस्ट्रेट्स, द सेल हैज नो सबस्ट्रेट्स. You do have this gene right here which codes for the inducible enzyme. अच्छा, दूसरे सिनेरियो में देखते हैं क्या है. दूसरे सिनेरियो में वी अगेन हैव अ सेल. उस सेल का न्यूक्लियस है. उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर यू स्टिल हैव द जीन कोडिंग फॉर द inducible enzyme, but this time you have some substrates. Now let me ask you this: in which case do you think
is the inducible enzyme को produce करने वाला structural gene, ये वाला gene, in which case do you think this gene is going to be expressed? उस सेल में जहां पे सबस्ट्रेट्स हैं या उस सेल में जहां पे सबस्ट्रेट्स नहीं है? यहाँ substrates हैं. जहां सबस्ट्रेट्स होंगे, बिल्कुल. एज बिकॉज इज देयर एनी यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम जिसके सबस्ट्रेट्स ही सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है? No. That's basically wasting ATP. And no cell in the body ever wants to waste ATP. This is a very, very important thing. किसी भी स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस या स्विच ऑन करने की जरूरत ही नहीं है अगर उसका काम नहीं है उसके प्रोडक्ट का. यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट्स नहीं है सेल में तो वी डोंट नीड द एंजाइम टू बी देयर इन द सेल. सो यहाँ पे इन दिस केस कैन वी से कि ये एंजाइम तभी प्रोड्यूस हुआ था जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट था? Yes. This is the definition of an inducible enzyme. Inducible enzymes are enzymes that are only produced if the substrate is present. एंड बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जीन एक्सप्रेशन एक बुरी चीज है कि जीन अगर स्विच ऑफ होगा ओह दैट्स बैड फॉर द सेल, जीन स्विच ऑन होगा या टर्न ऑन होगा ओह दैट्स गुड फॉर द सेल. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. यहाँ पे अगर जीन स्विच ऑफ था वाजंट दैट गुड फॉर द सेल? Yeah, it was. The opposite of what students have a misconception about कि switch off होने का मतलब है that's bad for the cell. No, switch off या switch on होना depends on the situation. यहाँ पे ये switch off हुआ because इसका कोई काम नहीं था, इस gene जो produce होने वाला था उसका कोई काम नहीं था. So there was no need to cause this gene to be expressed. यहाँ पे it was needed to be expressed क्योंकि इससे जो enzyme produce होना था इसका एक function था cell के अंदर. And this is why it's called an inducible enzyme. Enzymes that are only produced if the substrate is present. अच्छा, एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन है और वो ये है कि इस जीन को कैसे पता चला कि सबस्ट्रेट्स सेल के अंदर है? दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस. यू विल लर्न दिस व्हेन यू गो ऑन टू इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट, जहां पे यू विल लर्न कि सबस्ट्रेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं एक जीन के एक्सप्रेशन को. बट नाउ देयर इज नो नीड टू लर्न अबाउट दैट. You just need to understand the definition of inducible enzymes. Number 5, repressible enzymes. अब लेट्स लुक एट ये किस तरीके के एंजाइम्स हैं. Let me write down the definition for it. These enzymes are enzymes that are normally produced. इसका मतलब दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सबस्ट्रेट होगा या नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर एंजाइम्स जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, बट इट्स सिंथेसिस is stopped when an effector or a molecule, effector slash molecule, stops gene expression. Okay, let's look at an example. हमारे पास ये सेल है. इस सेल के अंदर we have this nucleus right here. Now let's zoom into the nucleus. In this nucleus, we now have एक cell, oh sorry, एक section of DNA, and let's make this as two single lines. Now obviously I know it's a double helix shape, but assume this right now to be a section of a DNA molecule. अब इस DNA molecule के section में you can assume this to be the gene जो कि किसी चीज के लिए कोड करता होगा. इन आवर एग्जाम्पल ये जीन कोड करता है फॉर अ रिप्रेसिबल एंजाइम. इसका मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि कभी भी किसी भी वक्त प्रोड्यूस होता है अनलेस एंड अनटिल इसी एंजाइम की सिंथेसिस रुक जाए जब एक अफेक्टर इस जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है. सो सपोज दिस जीन जब एक रिप्रेसिबल एंजाइम के लिए कोड कर रहा था, सो कोड्स फॉर अ रिप्रेसिबल एंजाइम. You now have this molecule right here in the nucleus. और अब ये molecule क्या करेगा?
ब्लॉक करेगा इस जीन को फ्रॉम गेटिंग एक्सप्रेस्ड, मतलब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग होने देने से। एंड यू कैन प्रोबेबली इवन फिगर आउट कैसे। ये जीन उसके प्रोमोटर रीजन को अटैक कर लेगा। जब ये जीन उसके प्रोमोटर रीजन पे जाके अटैच करेगा, इज दैट गोइंग टू लीव एनी स्पेस फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू अटैच? No. इट्स नॉट। सो यू कैन अज्यूम कि दिस, आई एम गोना इरेज दिस, ये जो प्रोमोटर रीजन के ऊपर बाइंडिंग साइट थी आरएनए पॉलीमरेज के, अज्यूम दैट दिस अफेक्टर या मॉलिक्यूल यहाँ पे आके इस बाइंडिंग साइट को कवर कर लेता है। अगर ये कवर करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं कर पाएगा। अगर डीएनए पॉलीमरेज नहीं अटैच कर सकता तो फिर इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। एंड जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, विच मीन्स कि अब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। मीनिंग, पहले जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था, यू कॉल दिस अ रिप्रेसिबल एंजाइम, कि नॉर्मली तो ये प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इसकी सिंथेसिस कैसे रुक गई? जब एक अफेक्टर ने इसकी जीन एक्सप्रेशन को रोक दिया। सो नाउ नो लॉन्गर द एंजाइम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। डज दैट मेक सेंस? Any confusion from repressible enzymes? I can't hear you if you're saying something. Am I audible? Yeah, I'm so sorry, sir. Actually, my laptop just shut down abruptly. I did not know what happened. All right, it's fine, it's fine. So, what point were you able to hear me at? You said that you were saying something about it's stopping something, I think. Okay, so as in, I'll just explain this last part again. We were talking about repressible enzymes, मतलब ऐसे एंजाइम्स जिनकी नॉर्मली प्रोडक्शन होती है, लेकिन उनकी सिंथेसिस, मतलब उनकी प्रोडक्शन, रुक जाती है जब एक अफेक्टर उस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन की एक्सप्रेशन को रोक देता है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव दिस जीन राइट हियर, जो कि कोड करता है एक रिप्रेसिबल एंजाइम के लिए। अब ये जीन एक्सप्रेस कैसे होगा? जब उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी। एंड डू यू एग्री कि अगर इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हमें करनी है तो फिर ये डीएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर की बाइंडिंग साइट से अटैच होना पड़ेगा? Yes.
Let's suppose if you have an effector या molecule that blocks this promoter region, is the DNA polymerase now going to be able to attach? No, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा? no, it won't happen. एंड क्या जीन एक्सप्रेशन फिर हो पाएगी ओवरऑल? No. व्हिच मींस कि एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इस सिचुएशन में उस एंजाइम का जो नाम हम देते हैं दैट इज रिप्रेसिबल एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन सिंथेसिस कब रुक गई? जब एक अफेक्टर या मॉलिक्यूल ने उस एंजाइम जिस जीन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, जीन की एक्सप्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, उस जीन की एक्सप्रेशन को ही रोक दिया। सो नाउ इवेंचुअली यू आर नॉट गोना हैव एनी मोर enzymes being produced. So, any confusions from repressible enzymes? No, it's clear. Okay, so today all we had to do was look at the keywords क्योंकि आगे जाके I'm just going to be using के this is an inducible enzyme, ये promoter region है, ये structural gene है, ये regulatory gene है. So you need to know the definitions for each of these keywords. So that's about it for today. If you do not have any questions, could you give a summary of what we did today? Yeah, okay. So basically, we discussed about regulatory genes, structural genes, and Mhm. basically that regulatory genes were the ones which regulate the expression of other genes, and basically they code for proteins which regulate the expression of the structural genes, and basically the structural genes are the genes which code for the proteins which have functions within the cell. And Mhm. then we discussed about the inducible enzyme, that it basically it is basically induced by its substrate. So the transcription for the gene coding for this enzyme is going to be induced when a substrate is present. And then we basically looked at repressible enzyme. Repressible enzyme basically the transcription of this gene of a gene coding for this kind of enzyme can be inhibited by the binding of a repressor protein on the operator region, I think. By the binding of the repressor protein? Yeah. I don't believe we talked about the repressor protein yet. Okay, so then the basically it can be inhibited by the binding of a molecule or like an effector which basically Hmm. prevents gene expression. Bilkul. Okay, so the repressor protein you talked about, we're gonna do this in next class when we talked about gene expression in prokaryotes. That's where all of this comes in. Okay. So if no confusion, then that would be it for today. Right. Thank you, Thank Lafia. you, Allah.